Let us look into this problem now. The problem is in the arrangement shown. So this is the arrangement. The springs are light. These two springs are light. Light means it is massless and have stiffness K1 and K2 respectively. The value of K1 and K2 is given. And the pulleys are ideal. There are two pulleys. These pulleys are ideal. Ideal pulley means massless pulley and frictionless pulley. From the lower pulley, an 8 kg block suspended from the lower pulley is initially held at rest, maintaining the strings straight and springs relaxed. So you are holding it on rest in such a way so that your strings and your springs are straight and relaxed. Relaxed means there is no stretch in the springs. Now the force supporting the block is gradually reduced to zero. Means you are trying to bring it lower. Gradually means the movement of mass is all the time in equilibrium state. Equilibrium state means the net force acting on mass m throughout the lowering procedure is zero. So how far does the block descend during the process of reduction of the force? So it is asking how far this block will descend. So it will descend to its maximum where you can leave your hand or the support so that it will remain stable in that condition. So this movement of block in the downward direction, the maximum descent is being asked in the question. Acceleration due to gravity is to be taken as 10 meter per second square. In this arrangement, we have taken this diagram here. In this arrangement, from here to here is one string, and the spring 1 is connected at this point. Same way, till here to here, there is another string, and the spring 2 is connected at this point with this string. So there are two strings, right? And two springs. So let us say that extension in spring 1 was x1, extension in spring 2 was x2, and the maximum descent of block M is x. So we are to find this x. What is this x? Since this spring has elongated by a length x1, due to which spring force will act on this thread upward, and that will be equal to K1 x1.
if we say this as T1, so T1 will be equal to your K1 X1 in string 1. Since string is massless, this string is massless, so the tension in the entire string at any point will be K1 X1. So on this side of the pulley, on this side of this pulley, this K1 X1 is the tension. So on the other side of the pulley also it will be, the tension will be same, that is K1 X1, that let us say that P1. In this spring elongation is of X2 length. So spring will exert a force on the string equal to K2X2, and this K2X2 will be the tension in the string throughout. So here also, on the other end also, K2X2 force will be acting upward on this pulley. Let us give the name of these pulleys for convenience. This is your number 1 pulley, this is your number 2 pulley. This one is number 1 pulley. So this is the free body diagram of number 1 pulley. So on number 1 pulley, which all forces are acting? That forces will be due to the tension in the string. And tension in the string is K1 X1 on the both sides. Okay. Here K1 X1, here K1 X1. And what will be the force acting here? That will be the tension in the second string, that is K2 X2. Pulley is massless because it is ideal pulley. So we can write the equation of motion since it is in equilibrium condition when the block already has descended by x. So you can write the equation of motion for this. So in the upward direction, how much force is there? K1 X1 plus K1 X1. So 2 K1 X1. And in the downward direction, K2 X2. So these two will be equal because it is in equilibrium. K2 is 2 times K1 from the numerical value what has been given here. So
So this you can replace with 2k1 x2. So here this and this will cancel out. X1 will be equal to x2. So this is one information which you will have. This is pulley number 2, the block diagram of free body diagram of pulley number 2. On pulley number 2 thread is wrapping around. So here it is K2X2, here it will be K2X2, right? And in the downward direction, it will be the gravitational pull on block M. So we will write the, since it is in stable equilibrium now, so net force will be 0. So we can write K2 in the upward direction force K2x2 plus K2x2. So 2K2x2 equal to M into G. So your x2 will be M into G. How much is M? 8. How much is G? 10. 2. K2 is how much? 200 Newton meter. Eight, 22, 40. So 8 5 40. So x2 will be 1 by 5 meter. But x1 is equal to x2 we have already obtained. So x1 is equal to x2 is equal to 1 by 5 meter. There is an elongation of x1 in spring 1 and other end of the spring is attached to the thread which is inextensible. So if this spring, the end of this spring is elongated by x1, so there will be a slack in the thread that will be equal to x1 spring has gone down by x1. So what will be the drop in this? Pulley
the drop will be x1 by 2. Why? Because when this end has gone down by x1, there a slack will appear on in your thread 1 by x1, but it is wrapped around the pulley. So x1 by 2, it has to be lowered so that x1 by 2, it will go from this end, x1 by 2, it will go from this end. So it means because of spring 1, number one pulley will go down by x1 by 2. So this one, this pulley has gone down by x1 by 2 because of elongation of x1 in this spring. So how much slack it will create on this thread, assuming that it was a complete thread from here to here. So the slack will be, since it has come down by x1 by 2, so slack will be x1 by 2 in this thread. So due to which x1 by 4 from this side it will come down, x1 by 4 from this side it will come down. Sorry. So this pulley will experience a drop of x1 by 4. Assuming that there was no spring here, it was an in thread through and through. So this part we are ignoring right now. Now ignoring the spring on this side, and just think of that this end of the spring has come down by x2. As we have said in the beginning that there is a stretch in spring 2 as x2. So this end has come down by x2, sorry. So because of this x2 drop or elongation in spring, if this was connected with a string, so we are only considering the elongation in spring 2. So spring 2 end has come down by x2. So this pulley connected at both end with the string. So x2 by 2 from this side it will come down, x2 by 2 it will come down from this side. So overall
it will have a drop of x2 by 2, this pulley. So total drop for these two cases, like one case considering for number one spring and second case considering for number two spring, so total drop of this pulley will be x1 by 4 plus x2 by 2. x1 and x2 is equal. Total descent we should write here. x1 and x2 is equal 3x1 by 4. The value of x1 you already got 1 by 5 meter. So if we convert it into centimeter, you will have to multiply by 100 in numerator. This is in meter. This one is centimeter. 5 ja. So total is 15 centimeters. So this will be your answer. So where is, you can find B is having the value of 15 centimeters. So B will be your answer. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है कि इस अरेंजमेंट से इस ब्लॉक को सेट किया गया है, हैंग किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि इस स्प्रिंग का स्टिफनेस K1 है और इस स्प्रिंग का स्टिफनेस K2 है। K1 एंड K2 जो है ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। दिस इज स्ट्रिंग नंबर 1 एंड दिस इज स्ट्रिंग नंबर 2। धागे से कनेक्टेड है ना, इनएक्सटेंसिबल धागा है, मासलेस है वो धागा, थ्रेड जो है वो मासलेस है, ठीक है ना, तो मास 0 है। और बोला जा रहा है कि इनिशियली हमने इसे रेस्ट में रखा विथ सपोर्ट, हमने इसके नीचे सपोर्ट डाल के इसको रेस्ट में रखा ब्लॉक को, और इस वे में रखा जिससे स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2 एंड थ्रेड्स आर वर्टिकली स्ट्रेट। तो उस कंडीशन में जब सपोर्ट के साथ है उस समय ये पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है। वहाँ पे स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं हुआ है, इस स्प्रिंग में भी कोई इलोंगेशन नहीं हुआ है। अब बोला जा रहा है कि ये जो सपोर्ट जो दिए हैं इसको आप धीरे धीरे घटा रहे हैं, सपोर्टिंग फोर्स जो है आप उसको धीरे धीरे घटा रहे हैं। इतना स्लो घटा रहे हैं कि ऑल द टाइम जो इसका मूवमेंट है जो नीचे की ओर आ रहा है मास, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 है। तो ऐसा घटाते 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 हमने जहाँ तक मैक्सिमम आया, जब ये सपोर्ट फोर्स 0 हो गया तो वहाँ पे इसका मैक्सिमम डिसेंट हो गया, उसको बोलेंगे कि वो डिसेंट हो गया। उसके बाद सपोर्ट हटा भी लेंगे तो वो उसी स्टेट में रहेगा।
इस डायग्राम में जो वहां से मैंने यहाँ लिया वही बताने की कोशिश की जा रही है कि इस वाले स्प्रिंग में मान लेते हैं हम लोग कि x1 का इलोंगेशन हुआ नंबर 1 स्प्रिंग में, एंड नंबर 2 स्प्रिंग में x2 का इलोंगेशन हुआ। ठीक है, अब ये जो जब और इसमें मैक्सिमम डिसेंट x का हुआ ब्लॉक में। ठीक है, तो x1 का जो इलोंगेशन नंबर 1 स्प्रिंग में हुआ तो स्प्रिंग फोर्स आ गया, तो वो स्प्रिंग फोर्स कितने के बराबर हो गया, k1 इंटू x1 बाई हुक्स लॉ। एक्चुअली लिखना चाहिए वहाँ पे स्प्रिंग इज द लीनियर स्प्रिंग एंड ओबेइंग द हुक्स लॉ, लेकिन ठीक है। तो आपको k1 x1 आपको स्प्रिंग फोर्स हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स किस पे लगाएगा, वो थ्रेड पे लगाएगा, थ्रेड से अटैच्ड है वो, तो थ्रेड पे k1 x1 का फोर्स आ गया, एंड थ्रेड इज मासलेस, तो इस पूरे थ्रेड में हर जगह पे जो टेंशन होगा वो k1 x1 होगा। तो ये पुली के अराउंड ये थ्रेड रैप है, तो यहाँ पे एक k1 x1 का फोर्स लगेगा पुली पे, नंबर 1 पुली पे, और यहाँ पे भी k1 x1 का फोर्स लगेगा। उसको हमने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा दिया है कि नंबर 1 पुली का ये कंडीशन। तो यहाँ पे k1 x1 लगा, यहाँ पे k1 x1 लगा, और यहाँ पे क्या है, दूसरा वाला जो थ्रेड है वो नंबर 2 पुली के साथ लगा हुआ है, इसमें x2 का एक्सटेंशन हुआ है, तो इस थ्रेड में टेंशन आपको k2 x2 होगा थ्रू आउट, है ना। तो ये चीज जो है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे वो दूसरा थ्रेड शुरू हो गया, तो k2 x2 का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में है, अब इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, नो एक्सेलरेशन नथिंग। तो अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू द, जो ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसका सम जो नीचे की ओर टोटल फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। तो मैंने डाल दिया k2 x2 will be equal to k1 x1 plus k1 x1 that is 2 k1 x1। तो x1 आपको यहाँ से x2 मिल गया, x k2 को हमने 2 k1 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि k1 की जो वैल्यू है 100 न्यूटन मीटर दिया हुआ, k2 की 200 है, मतलब k2 k1 से डबल है, तो इसलिए k2 को हमने 2 k1 से रिप्लेस कर दिया, और उस वजह से मुझे x1 और x2 मुझे इक्वल मिल गया। इसका मतलब ये है कि जितना इलोंगेशन इस स्प्रिंग में हुआ है उतना ही इलोंगेशन इस स्प्रिंग में भी हुआ है। ठीक है, अब मैंने नंबर 2 पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो नंबर 2 पुली पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, नंबर 2 थ्रेड का टेंशन फोर्स यहाँ लग रहा है, नंबर 2 थ्रेड का टेंशन फोर्स यहाँ लग रहा है। तो नंबर 2 थ्रेड में कौन सा टेंशन फोर्स है, k2 x2 है, क्योंकि इस स्प्रिंग से अटैच्ड है। स्प्रिंग में x2 का इलोंगेशन हुआ है, तो k2 x2 स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, वही टेंशन आपके स्ट्रिंग में जनरेट हुआ है। तो k2 x2 ऊपर की ओर लगा इस एंड पे, k2 x2 इस एंड पे ऊपर की ओर लगा, और यहाँ पे नीचे की ओर कौन सा, इस पे इस सिस्टम पे कौन सा नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज वेट ऑफ दिस मास mg। तो अब मैंने उससे भी अपवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो इक्वल कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी है, कोई मूवमेंट, कोई मोशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो x2 आपको सारा वैल्यू रखने पे 1/5 मीटर मिल गया, और x2 यहाँ पे हमने x1 निकाला हुआ, तो x1 भी आपको 1/5 मीटर हुआ। अब आप इस चीज को समझिए कि इसमें जब x1 का इलोंगेशन हुआ तो ये पुली कितने से नीचे आया, पुली दोनों साइड से कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पोर्शन अगर x1 से नीचे आया होगा, x1 से जब नीचे आया है तो इस थ्रेड में x1 का स्लैक आया होगा, है ना। लेकिन ये पुली
के दोनों एंड पे थ्रेड है, तो इसमें इस वाले थ्रेड में x1/2 का ड्रॉप होगा और इस वाले थ्रेड में भी x1/2 का ड्रॉप होगा, तो टोटल x1 को वो एकोमोडेट कर लेगा। तो इसका मतलब है कि इस स्प्रिंग में जो x1 इलोंगेशन हुआ उसकी वजह से इस पुली का ड्रॉप x1/2 हुआ। अब इस डायग्राम में आ जाइए, ये जब x1/2 से नीचे आया, ये वाला पुली नंबर 1 पुली, ये नंबर 1 पुली है, ये भी नंबर 1 पुली है, इसको नंबर, ये पुली जब x1/2 से नीचे आया तो इस वाले थ्रेड में x1/2 का स्लैग क्रिएट किया होगा। तो उस x1/2 का स्लैग को एकोमोडेट करने के लिए यहाँ से थ्रेड ये वाला ये पोर्शन x1/4 से नीचे आया होगा और ये वाला पोर्शन भी x1/4, x1/4 plus x1/4 will be x1/2. So because of elongation of x1 in this, इस वाले स्प्रिंग में x1 का जो elongation है उसकी वजह से इस पुली में, इस पुली का जो एक्सेल है वो x1/4 से नीचे आ गया। ठीक है, अब हमने बोला है कि K2 जो दूसरा स्प्रिंग है उसमें x2 का इलोंगेशन हुआ है, तो ये थ्रेड से लगा हुआ है। तो इस x2 की वजह से ये वाला एक्सेल x2/2 यहाँ से नीचे जाएगा, थ्रेड इसी है नीचे जाएगा, और x2/2 यहाँ से नीचे आएगा, तो x2 को एकोमोडेट कर लेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस x2, इस पुली का एक्सेल x2/2 से नीचे आया, इसकी वजह से x1/4 से नीचे आया। जब दोनों को साथ में सुपर इम्पोज करेंगे तो टोटल ड्रॉप कितना हो जाएगा इस पुली के एक्सेल का, x1/4 ड्यू टू नंबर 1 स्प्रिंग and x2/2 ड्यू टू नंबर 2 स्प्रिंग। इन दोनों को सम कर देंगे, x1 इज इक्वल टू x2 है तो आपने ये वैल्यू रख दिया। तो टोटल डिसेंट ऑफ दिस एक्सेल 15 सेंटीमीटर से हो गया, और ये मास इस पुली के एक्सेल से ही कनेक्टेड है, तो ये भी आपको 15 सेंटीमीटर से नीचे ड्रॉप होगा, डिसेंड होगा, और यही मुझे फाइंड आउट करना था। आपके चॉइसेस में बी का चॉइस 15 सेंटीमीटर है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।